Let me tell you some problems of being 6'2" in life. You know this camera is on the highest shelf of my rack and मुझे इसे बात करने के लिए झुकना पड़ रहा है. अगर मैं straight up खड़े हो जाऊं तो this is where I'll be. So anyways, set up, dude. Set up, dude. So anyways, it's your boy. Arman Rizvi back presenting himself in front of an audience of 15-year-old viewers. Usually मेरी हर live stream पे the biggest question I get asked is भैया BG माइक खेलो भैया Minecraft भैया Splitgate भैया I'm 11! Oh, 21! But the second most frequently asked question I get asked is setup tour बताओ, PC के specs बताओ, कितना पैसा है तुम्हारे पास? So I built up a setup tour video for you guys to enjoy. थोड़ा बहुत रूम टूर भी देंगे because 100-200 व्यूज के लिए अजनबियों के सामने अपनी पूरी जिंदगी बयान करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ. So चलिए शुरू करते हैं. fucking idiot. So यहाँ पे ये गंदे फर्रे आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने 8th क्लास में बनाए थे. अभी तक मैंने हटाए नहीं बिकॉज मैं गवार हूँ. As you come inside the room you can see the first thing that you are greeted with is my PC setup because यहाँ पे मैं अपने दिन का ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता हूँ. Moving on to the right we have my bed, beautiful bed as fucking usual. AC के ऊपर मैं सोता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ मुझे जुकाम क्यों होता है. बहन चूतिया. We have some books here you can see. मैं बहुत ज़्यादा जोरों में कोशिश कर रहा हूँ मेडिकल के अंदर घुसने की. देखते हैं क्या होगा उसको लेके. Moving on to this side we have some guitars and my Fender amp. This is the Fender Mustang GT40. It's a beautiful piece of equipment by Fender. It's a Bluetooth connected, Wi-Fi connected guitar amplifier for my Squier Bullet Start. Here's some music that I play. कमरे के बाहर एक मेरा यामाहा का कीबोर्ड भी रखा है. I also play the piano. And moving on, so yeah, that's some of my music जो मैं आजकल अपने YouTube पर डालता नहीं हूँ. Moving here is my study desk. यहाँ पे मैं पढ़ाई चलती है. यहाँ पे मैं दिन का सबसे कम समय स्पेंड करता हूँ. Here's a little wireless fucking lamp, stupid fucking piece of shit. Here's something interesting that you guys might like. This is a FIO M1 audio player. This beautiful little thing can output FLAC files, which means high res audio. मैं अच्छा खासा low की level का audio file ज़रूर हूँ. मुझे अपना music बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में पसंद है तो मैंने ये खरीदा हुआ है. उसके साथ एक ये भी जाता है मेरा FIO A1 DAC. This helps power up my headphones. I have the Audio Technica M20X. Moving on top of here, here's some motivational quotes I wrote when I was in my emo phase. This is a rack of jackets I have to wear in the winters and ये मेरी सबसे unorganized rack है जिसमें मेरे सारे technical wires वगैरह सारी चीज़ें, मेरे stationery जो बिल्कुल messed up पड़ी है और मेरी दवाइयाँ वगैरह पड़ी रहती हैं because I'm sick so often. Coming outside here, here's a nice little dartboard. जिस dartboard के darts सालों पहले खो गए थे. ये रहा तुम्हारा white boy. इससे You know, coming out back from here is my fucking अलमारी जिसको तुमने स्ट्रीम पे काफ़ी बार देखा होगा. Let me just tell you guys that these holes here ये मैंने मुक्के मार के किए हैं because I have anger management issues. इसके अंदर मैं अपने कपड़े रखता हूँ काफ़ी अच्छे से, you know, organized and shit. Fuck yeah, let's go, close that up. दूसरी वाली अलमारी में क्या है मैं नहीं बताऊँगा. घूम फिर के अपन आ जाते हैं मेन अट्रैक्शन पे जो है मेरा PC. Guys, this is the screening setup. Mostly I have a triple monitor setup right next to my desktop PC. ये हम OBS यहाँ ऊपर चला के रखते हैं जब आप स्क्रीन कर रहे होते हैं. यहाँ पे मैं अपनी चैट पढ़ता हूँ, यहाँ मेरा गेम पे चल रहा होता है और यहाँ पे मैं OBS मॉनिटर कर सकता हूँ. So let's start getting into the details कि कैसी हैं चीज़ें, क्या चीज़ें, कौन से specs अपन यूज़ कर रहे हैं इन सब के लिए. So let's move on to the next up.
So before we get into the prices of each individual component, मैं जल्दी से अपना डेस्कटॉप का टूर दे देता हूँ आपको. I have this basic table, ट्रॉली टाइप टेबल, जिसके ऊपर मैंने एक वाइट बोर्ड रख दिया है जिससे कि मेरे उसकी स्पेस बढ़ जाए रखने की, और एक प्रेस आयरनिंग टेबल के ऊपर मैंने अपना डेस्कटॉप रखा है. साइड में एक पुराना चीप प्रिंटर है. Coming into the desktop, everything resides inside a Game Diaz local case that I brought locally for 1800 rupees. Mota, there's a Intel i5 10400 processor in there. It has 6 cores and 12 threads, clocked at 4.2 gigahertz. The top speed, it's cooled by a Deepcool Gamax 400 cooler. And for my graphics, I have a GTX 1650, the GDDR6 model, 4GB VRAM. There's also a simple fan. Coming up top of the case, we have this little magnetic dust filter, जिसके अंदर मैं tissue paper लगा रखा है with my external hard drive right there. There's a power supply here to power everything up. It goes back inside here, plug socket. Coming behind all the setup, the TV is resting on a MacBook Air case because I'm too cheap to afford a full VESA mount case or have it hung on my wall. वो सब बाद में आएगा. There's also an MSI G24C curved 144Hz display monitor with my Cosmic Byte CG61K mechanical keyboard. There's also a basic fast type mouse pad. उसके ऊपर मैं Logitech G402 mouse चला रहा हूँ. Fantastic mouse, 10 out of 10. Would recommend. The microphone that I use is a Zoom H1 handy recorder. It's plugged in via USB. You're sitting on a simple Cadence microphone stand. I have my headphones right here, the Audio Technica M20X, and here's my super ultra edition gaming chair, one of a kind. It gives you 100 FPS boost. Nah, I'm just kidding. Gaming chair बाद में आएगी. And on the left side, I keep a water bottle handy. You know, you got to stay hydrated. Coming back to the desktop, there's a bunch of USB extension port, and there's also a PCIe USB card inside to increase the number of USB ports coming. And I'm actually using this desktop in a dual GPU system. Intel का जो integrated processor है, उससे एक VGA और एक HDMI निकलती हुई मेरी TV और छोटे वाले मॉनिटर को पावर कर रही है. और मेरी GTX 1650 से जो HDMI निकल रही है, वो मेरे MSI के मॉनिटर को पावर करती है. So yeah, let's get into the details of all the prices of the components. So unfortunately, even though मैं चाहता था मैं एक सिंपल PC पार्ट पिकर यूज़ करके आपको सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दिखा दूँ, पिछले 10 महीने में इस कदर ऊपर नीचे गई हैं प्राइसेस. दिस विल नॉट शो यू द एग्जैक्ट accurate pricing of the system that I have built so far, and it won't even show all the right components or the peripherals I have used. So I made this little document in WordPad to show you essentially क्या क्या products हैं और कितने प्राइस पे मैंने ख़रीदा है. I'd like to mention that मैंने ये PC basically 2 phases में बनाया है. एक फेज़ में मैं इसके integrated graphics और छोटे से monitor पे गेमिंग करता था, और उसी पे मैंने स्ट्रीमिंग भी की है. The grind never stops, you know. But उसके बाद eventually, after earning some money, I upgraded my monitor and my GPU. A significant amount of this entire system has been paid by me, whether it be saving up money over the years or the fact that मैं बहुत बचपन से editing करता आ रहा हूँ. No. Where's your Ducati then? So for the last few months, I have been doing part-time video editing for some social media groups. तो स्वागत नहीं करेंगे आप हमारे कंटेस्टेंट का. मुलाकात करिए इन सारे घर वालों से भोपाल की बातों के नए शो बिग बॉस में. So earning money from all these places has helped me fund the finance for this entire system. And yeah, 11-12 साल की उम्र से I really wanted a PC जिसको मैंने अपने हिसाब से build किया होता, and it really feels good to finally have one. Finally मैं अपनी सारी projects, streaming, gaming जो मैं करना चाह रहा था इतने 55 की उम्र से कर पा रहा हूँ. So it honestly feels very satisfying. So yeah, this has been the setup tour. I made it in a sense so if someone wants to copy my build, it would be accessible for them. I want to add that I'm currently not 100% invested into my YouTube. I'm at the point in my life where I really do have so many things lined up, and focusing solely on YouTube is just not a priority. But the response I've got over the past month, all the people who join in the live streams to chat and to watch the gameplay, and also the other streamers I've been playing with, the fun little community we have built in such a short time are things that I'm really grateful for.
In the coming times, you'll definitely see the quality of my content going up. I wanted to be an active YouTuber or have an active YouTube channel ever since I was a kid, watching PewDiePie or KSI or one of those guys. And this just might be the opportunity for me to try my hand at content creation. I'd also like to remind you that we have an awesome little Discord community where you'll find really cool folks chatting about, and you can come in contact with me personally there as well. Thank you for watching till the end of the video, and I wish you all the best. Until next time, guys. Peace.